हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे लास्ट पार्ट ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन पे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द रेप्लिकेटिव सेनेसेंस। सो रेप्लिकेटिव सेनेसेंस इज द रीजन वाई नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिविजन। ओके, এই রেপ্লিকেটিভ সেনেসেন্স ইজ দ্য মেইন রিজন जिसके कारण नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल आर कैपेबल टू डू ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिविजन। उसके ज़्यादा इट कैन नॉट परफॉर्म फर्दर सेल डिविजन, राइट। सो रेप्लिकेटिव सेनेसेंस विल प्रिवेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल डिविजन, राइट। सो scientist Leonard Hayflick in early 1960 observed that when he was culturing human cells in tissue culture, he observed that after a limited number of times the cell further not performing any kind of cell division। मतलब जब वो ह्यूमन सेल को एक टिश्यू कल्चर में ग्रो करवा रहे थे, उन्होंने देखा कि आफ्टर ए सर्टेन टाइम दैट पर्टिकुलर ह्यूमन सेल आर नॉट परफॉर्मिंग फर्दर सेल डिविजन। एंड उन्होंने उस पर्टिकुलर लिमिटेड नंबर को बोला था हेफ्लिक नंबर। तो हेफ्लिक नंबर और हेफ्लिक लिमिट। So Hayflick limit is the number of mitosis a cell is capable of undergoing before in tissue culture before it stop dividing। Okay, मतलब Hayflick limit is the number of cell division a cell is capable of doing। if Hayflick limit का वैल्यू 8 है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर सेल 8 बार माइटोसिस कर सकता है, उसके ज़्यादा नहीं। Okay, so that is the idea। So now the question is how the process replicative senescence is going on। So for knowing this, we first have to learn about the telomere। So telomere eukaryotic chromosomes के end में रहता है। This telomere is short randomly repeated DNA sequence that usually protect the eukaryotic chromosome। Okay, not only that, it also involved in intracellular signaling which is responsible for cell cycle proliferation। Okay, so सेल कितना दूर तक प्रोलिफरेट करेगा वो भी टेलोमियर डिफाइन करता है। ओके, सो नाउ फर्स्ट हम लोगों को एक एंजाइम के बारे में जानना होगा, दैट इज टेलोसोम, विच इज यूजुअली ए 6 प्रोटीन कॉन्टेनिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग शेल्टरिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। This telosome is responsible for maintaining the structure of the telomere and also its signaling function। Okay, so that is the first slide जहाँ पर हमने पहले बात की about the replicative senescence चीज़ क्या है। It is the main reason why eukaryotic cell are capable of undergoing a limited number of cell division। उसके बाद हमने बात किया it is only a silent feature of somatic cell, tumor cell and सर्टेन स्टेम सेल रेप्लिकेटिव सेनेसेंस नहीं दिखाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ट्यूमर सेल एंड स्टेम सेल हैव द एबिलिटी टू डिवाइड इन फॉर ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। सो हेफ्लिक एट द अर्ली 1960 observed that condition when he was culturing human cell in tissue culture, and he also gave the term Hayflick limit। So the main reason for replicative senescence is telomere shortening, that is we will going to talk about। And before that we have understood about the telomere। Telomere is the short randomly repeated DNA sequence present at the end of the eukaryotic chromosome। They protect the chromosome, not only that, they involved in intracellular signaling that facilitates cell proliferation। Okay, so later we have also talked about telosome। Telosome, a complex of 6 proteins together known as sheltering complex that is crucial for both the maintenance of the telomere structure and also signaling function। So now let's talk about the main thing, that is telomerase। So telomerase is the enzyme which actually maintains the length of the telomeric DNA। and हमने just पहले क्या बोला कि replicative senescence is due to टेलोमियर शॉर्टनिंग, राइट। इसका मतलब रेप्लिकेटिव सेनेसेंस उस सेल में ही देखा जाता है जहाँ पर टेलोमियर अपने लेंथ को मेंटेन नहीं कर सकता, राइट। सो इस चीज़ से ये चीज़ क्लियर है कि सोमाटिक सेल
जहाँ पर रेप्लिकेटिव सेनेसेंस दिखा जाता है, इट विल बी टेलोमेरेज नेगेटिव, राइट। मतलब उसके पास टेलोमेरेज एंजाइम नहीं होगा, राइट। क्योंकि अगर टेलोमेरेज एंजाइम रहा so it can maintain the length of the telomeric DNA very easily. But as it is showing replicative senescence, that means it is telomerase negative. That means it cannot maintain the length of the telomere. So अब बात आता है कि टेलोमियर के लेंथ के साथ छेड़छाड़ कौन करता है। एक चीज़ हम लोगों को याद रखना होगा कि each time the cell is going for a cell division, the length of the telomere will shorten. मतलब हर एक बार जब एक पर्टिकुलर सेल डिवीजन के लिए जाएगा, आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ दैट वी विल ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ द टेलोमियर थोड़ा सा छोटा हो चुका है, राइट। एंड दिस इज ड्यू टू द इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम्स। एंड ऐसे चलते चलते आफ्टर ए सर्टेन एक्सटेंट टेलोमियर का लेंथ इतना छोटा हो जाएगा कि इट विल प्रोमोट सम डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स। ओके, मतलब टेलोमियर का लेंथ उस सर्टेन लिमिट के बाद इतना छोटा हो जाएगा कि इट विल इंड्यूस डीडीआर पाथवेज, राइट। एंड दिस डीडीआर पाथवे विल गोइंग टू इंड्यूस P53 डिपेंडेंट सेल साइकिल अरेस्ट। एंड हमने इस पहले वीडियो में ही पढ़ा था कि P53 हैव द एबिलिटी टू इंड्यूस P21 एंड दिस P21 हैव द एबिलिटी टू अरेस्ट G1 फेज सेल साइकिल। सो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ हो सकता है एंड दैट अल्टीमेटली फैसिलिटेट सेलुलर सेनेसेंस, राइट। एंड दैट इज वाई आफ्टर दैट पर्टिकुलर number of cell division the cell will not perform further cell division because cellular senescence is a irreversible type of cell cycle arrest। मतलब एक बार अगर cellular senescence हो गया तो फिर से वो that particular cell will not go for another round of cell division। okay, so that is the thing that is going on in case of normal somatic cell जिन लोगों के पास टेलोमेरेज एक्टिविटी मौजूद नहीं है। ओके, और एक बार बता देता हूँ कि हर एक सोमेटिक सेल जब एक राउंड ऑफ सेल डिवीजन के लिए जाता है उसके बाद देखा जाता है कि द लेंथ ऑफ द टेलोमियर इज शॉर्टेंड। एंड ऐसे चलते चलते आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ सेल डिवीजन टेलोमियर का साइज इतना छोटा हो जाता है कि इट विल इंड्यूस सम डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स and that ultimately facilitate P53 dependent cell cycle arrest, for example G1 phase cell cycle arrest, and that ultimately brings a irreversible type of cell cycle arrest known as cellular senescence। okay, and that is the reason why after that this particular cell will not go for further cell division। okay, now और एक चीज़ इसके साथ साथ क्लियर हो जाता है कि जो स्टेम सेल एंड कैंसर सेल के बारे में हमने बात किया था, स्टेम सेल, कैंसर सेल, ट्यूमर सेल, दे हैव दिस टेलोमेरेज एक्टिविटी। ओके, सो पहली बात टेलोमेरेज चीज़ क्या है। टेलोमेरेज एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है एंड दे हैव द पावर टू ओवरकम दैट इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम विच वॉज द मेन रीजन फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ द टेलोमियर इन केस ऑफ सोमेटिक सेल विच आर लैकिंग टेलोमेरेज एक्टिविटी, राइट। सो टेलोमेरेज के पास वो पावर है इन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को ओवरकम करने का, एंड दिस पावर इज टेलोमर मेंटेनिंग मैकेनिज्म। ओके, एंड दिस टेलोमियर मेंटेनिंग मैकेनिज्म विल प्रोवाइड दोज टेलोमरेज कंटेनिंग सेल ए इनफाइनाइट रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। क्योंकि टेलोमरेज उस सेल को छूट देता है कि भाई तुम जितना चाहो रेप्लिकेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ओके, so that is the thing what telomerase provides। so telomerase is a reverse transcriptase that have the ability to overcome in replication problems via mechanism called telomere maintaining mechanism, okay, that promote infinite replication potential। okay, and that is the reason why cancer cell, rodent cells, stem cells have the power to divide for an infinite number of times which our somatic cell lacks। so ये चीज़ देखा गया है कि in case of human tumor cell 90% human tumor cell have the ability to produce telomerase and use that telomerase। मतलब उन लोगों के पास टेलोमियर मेंटेनिंग मैकेनिज्म है
and that is why they are having infinite replication potential. पर 10% ह्यूमन ट्यूमर सेल के पास टेलोमरेज नहीं रहता है, and they are using a alternative mechanism to maintain their telomere length, and that is known as alternative lengthening of telomerase, which is totally telomerase independent process. इस प्रोसेस के साथ टेलोमरेज का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, एंड दिस प्रोसेस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सैकारोमाइसिस सेरेविसी. यहाँ पर देखा गया है कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मीडिएटेड डीएनए रेप्लिकेशन का मदद लिया जाता है टू मेंटेन द टेलोमियर लेंथ. तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ रेप्लिकेटिव सेनेसेंस. सो पहले हमने जाना कि रेप्लिकेटिव सेनेसेंस इज द मेन रीजन वाई यूकैरियोटिक सेल आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिविजन. उसके बाद दैट पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल विल नॉट गो फॉर फर्दर राउंड ऑफ cell division. So Hayflick was the scientist who first see this during in the early 1960 during he was culturing human cell in tissue culture. He observed that cell are not going further round of cell division after a certain number, and he mentioned that certain number as a Hayflick number, that is the number of mitosis a cell is capable of doing in tissue culture before it stop cell dividing. Okay, and this is known as Hayflick limit. And he mentioned that telomere shortening is the main causal mechanism of replicative senescence. We have learned that what is telomere. Telomere is the DNA sequence, short randomly repeated DNA sequence presents at the end of the eukaryotic chromosome. एंड यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत बोला कि हेफ्लिक ने ये चीज़ नहीं बोला था कि टेलोमियर शॉर्टनिंग इज़ द मेन रीजन फॉर रेप्लिकेटिव सेनेसेंस. सो वो चीज़ बाद में आएगा. सो नाउ दिस टेलोमियर विल प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम एंड ऑल्सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग फॉर रेगुलेटिंग सेल प्रोलिफरेशन. नाउ we have talked about telosome, which is a complex of 6 proteins, which is also known as cell-terine complex. It is important for maintaining the structure of the chromosome as well as important for its signaling function, right? उसके बाद हमने देखा about the telomerase, which is the main culprit that giving tumor cells, stem cells, rodent cells the power to infinite replicative potential. Telomerase is the enzyme जो स्टेम सेल ट्यूमर सेल को पावर देता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेप्लिकेशन करने के लिए. सो इट इज़ द एंजाइम दैट मेंटेन द लेंथ ऑफ द टेलोमियर एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ सोमेटिक सेल, एंड दैट इज़ वाई आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ सेल डिविजन टेलोमियर का साइज इतना छोटा हो जाता है कि इट विल इंड्यूस डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स दैट विल अल्टीमेटली फैसिलिटेट p53 डिपेंडेंट सेल साइकिल अरेस्ट एंड अल्टीमेटली इरिवर्सिबल सेलुलर सेनेसेंस. सो लास्ट हमने देखा कि ह्यूमन ट्यूमर सेल के अंदर 90% केस में टेलोमरेज रहता है, 10% केस में ऑल्टरनेटिव लेंथनिंग ऑफ टेलोमरेज को यूज़ किया जाता है, विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सैकारोमाइसिस सेरेविसी. They actually uses homologous recombination mediated DNA replication to maintain the length of the telomere. So ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि length of the telomere is very important to maintain how much number of cell division a particular cell will perform. Okay, so that is the idea of replicative senescence. एंड यहाँ पर हम लोगों का सेल साइकिल का रेगुलेशन का जो वीडियो लेक्चर सीरीज था वो ख़त्म हुआ, एंड इसके बाद से माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में शुरू करना होगा. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास.